Meaning, क्यों नहीं? Exactly. Sorry. Canada or US? It's US, huh? yes. Okay. That is the problem with the Canada. Always follow US. They have no choice. Hello. Hi. You can sit here if you're Today's economy or there. that is Anywhere. आएंगे. So that's fine. No problem. It's always here, first come, first serve. So, and the faster you can come in, log into Ninja, the better it is, because other than you won't have to. Because he normally comes at 2 o'clock in the afternoon, right? All right, let's do this. Give me a second. Let me set up my. Am I on properly? Let's see. Okay. तो यार ये जो ग्रांट वाला सिस्टम ये ठीक है वो जो आजकल इतना ऐड चल रहा है एक्चुअली द थिंग इज मैं लेजिट लोगों को मैंने बेचा है ओके उसमें ये अभी भी नहीं समझ आ रही हाउ मच यू हैव टू पे बैक इन OSAP ओके इट इज OSAP इट्स नॉट अ व्हाई दे राइट ग्रांट portion of it is grant ओके portion of it is OSAP. So It's going to be, you're going to be liable for this. Oh, It's okay. linked to your CRA and everything else. Really? Okay. People are not telling you that. मेरे तो legit लोग हैं like I send to people I'm also registered Mm-hmm. so I'm one of the agents as well Okay. so मैं तो legit लोगों को देता हूँ But the whole idea of grant is grant, meaning 40% grant oh, there is some because generally grants you don't pay back. That's the Now somebody is doing, let's say, web designing and all. Mhm. So they'll get a certain portion in OSAP and certain portion in grant. Fair enough. Fair enough. That's fair enough. But what people are doing is they're doing something wrong. They're just putting the money in the pocket. And the thing with OSAP is even if somebody goes bankrupt, you can't. Yeah, I know. Student loans, see, death, I mean, taxes, even until death, you gotta pay the taxes and 22. Yeah, you pay the tax rate, right? सर ये जो हमारा एक एरिया लग चुका है एक लग गया अब R2 का वेट करें 56 में आई है वहां पे मिसल कर तो वहां पर सेल करना था जी करेक्ट हाँ देखें जो R1 से थोड़ा सा बाउंस पता कितना हुआ 4 पॉइंट का बस तो वो 56 हमारा एरिया क्या है अभी आपको बता देता हूँ एरिया था 51 से 60 अभी R1 के अंदर है इस वक्त लेट्स सी कि ये रिट्रेस लेती है कि नहीं अभी एरिया के अंदर है क्योंकि अगर आपको अलर्ट भी आया है जो भी है तो कंप्यूटर ने ये कहा है कि यहाँ से एक थोड़ा सा रिवर्सल होना चाहिए तो लेट्स सी अभी नहीं अभी तक तो मैं 50 हाँ पहले लग चुका है क्योंकि देखें ये कहाँ से रिवर्स हुई है ऑलमोस्ट एक सेकेंड ये गई है 56 से 52 तक 4 पॉइंट दे चुकी है 4 तो R1 ने 4 पॉइंट हो चुके हैं अब R2 का वेट अभी भी उसके अंदर है एरिया के अंदर पहली फर्स्ट था देखें एक्सपेक्टेड हाई पे 5, 6, 8 पॉइंट R2 पे एटलीस्ट 4.1 मिल जाते हैं और R1 पे जितना छोटा मैं हमेशा ये देखता हूँ प्राइस आ कहाँ से रही है मुझे नहीं परवाह होती जितनी लंबी स्विंग होगी उतनी लंबी रिट्रेस होगी अगर पूरी रात मार्केट मूव नहीं हुई मैं सुबह 3 बजे उठ गया था देखा हल्का सा 5 लाइक 47 से स्टार्ट हुई है और अभी भी 54 पे तो और पूरी रात आपका नैस्डैक भी नहीं मूव हुआ नो क्योंकि हर 5 दिनों से वो डेड हुई है ना सो इट्स एरियाज में लॉस कितना
देखिए लॉस की मैं आपको वीडियो बताई हुई है कि 20 टिक से ज्यादा नहीं, अगर तो आपका माइक्रो कर रहे हैं तो आप अगले एरिया पे एवरेज कर सकते हैं। सो ऑलराइट, रखे जिस एरिया से जिस एरिया से डिपेंड एग्जैक्टली, इसीलिए वो जो टेलीग्राम पे अलर्ट है ना, वो आपको बताता है कि मैं करवा देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। These guys are not following correctly. All right. Yes, yes, yes. नहीं, ये तो आप फ्री वाले के अंदर है। आप एक पेड है, मैंने कि सुपर वेबसाइट खोलें superareas.com, फोन पे Yeah. मैं भी आपको करवा देता हूँ। All right. What's this? मेरा आइडिया है, आप कर सकते हो, सब लोग कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं? हाँ, मैं आपके साथ लाइव था। नहीं, सब कुछ चीजें मैं ऐसे हाल हो गया, मेरे को लगा मैं गलती हुआ, मेरा प्रोसेस गलती है, ऐसे नहीं है। देखिए जब आपने मुझे मैसेज किया हम सारे ट्रेड में थे, ठीक है, और मैंने हर एक से कहा होल्ड करके रखे। कुछ लोग 43 पे थे, कुछ 44 पे, मैं 141 पे था। एवरीबडी गॉट आउट, एवरीबडी। नहीं प्रॉफिट, कुछ ने प्रॉफिट दिया था उस ट्रेड ने। लेकिन मैंने उसमें से फिर भी 50 साल लेके निकला हूँ, क्योंकि जब वो पूरा घूम के आई है तो उसने मुझे 39 तक बंद किया है, तो इट्स ओके। होता है 10% केसेस हो जाता है, लेकिन कल भी एरिया में हमें लॉस नहीं हो, लेकिन हो भी जाता है loss। नहीं, अगर तो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ता है ना कि कहाँ पर जाके बंद करेंगे, तो कहाँ। अब मेरा तो कोई ऑप्शन नहीं था, मेरा अकाउंट लूज होने वाला था। हाँ, तो आप तो आर ट्रेडर के अंदर से खोलो। गुड मॉर्निंग जी। ऑलराइट जी। All right, good morning, everybody. Wednesday, June 25, 9:09 a.m. Eastern. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to superareas.com. Well, thank you for coming in person as well as online, joining our live stream. We are live on Zoom, we're live on YouTube, and private stream as well as Telegram. Good. Let's say everything is all good. Let's take a look at first Forex Factory. Only important is starting at 10 o'clock, your Fed chair is going to testify. So it's not news, it's just his statement against, in front of Congress to why they're not doing, there is no more war going on between Israel and Iran. So that's a ceasefire for 12 days. So that shot the market up. Maybe interest rate will cut soon. So let's look at 10 o'clock. We will watch out for new home sales. And if you're trading crude oil, watch out around 10:30. Areas are updated Wednesday, June 25. And let's look at Nasdaq high. So Nasdaq high is 22,511. Low 22,385. So your 126 move. Okay, ES, what's your high and lows? ES is 57 is high and 38 is low. So 57 to 38. So no move, only 20 points move. Very, very dead market. Lots of divergence. Price should go down. It is ridiculously high for the last 2 to 3 days, one way up. So let me log in this here and we'll figure out. I'm just waiting for Daniel's brief to figure out. Most likely high to go low would be our plan. And we'll go accordingly after that. तो टेलीग्राम आया ना मेरा सुपर। नहीं, देखिए आप गलत जा रहे हैं। होम पेज पे जाएं, टेलीग्राम के होम पेज पे जाएं। टेलीग्राम का होम पेज? नहीं, हम सुपर एरियाज के होम पेज पे जाएं, नीचे लिखा हुआ है ज्वाइन प्राइवेट टेलीग्राम। आपने पब्लिक वाला ज्वाइन किया हुआ है।
और उसके 3 स्टेप्स फॉलो करें कि अलर्ट्स जहाँ आते हैं। Alerts, please. $22,500, incredible. That's incredible. Given the situation that we're in with the war and everything else that's happening in the world. So, Yeah, that level. so that shows you how much manipulation is there. Absolutely, sir. ये होम पे जाए ना, हाँ हाँ, नहीं फिर आप साइन इन पे चले जाते हैं, एक पीछे जाएं। पीछे है। हाँ ये देखें, ये इसको फॉलो करें, ये लिखा है टेलीग्राम। देखें यार किधर गया आप। एक सेकंड सर, इसको क्लिक करें, ज्वाइन नाउ, ये लिखा है ज्वाइन नाउ। ओह, Yes. So we're inside R1 for Nasdaq. And let me double check. Both market we are inside. So upper range of R1 and ES is inside R1. So both markets are, because robo-taxi on Tesla, really, I saw that pushed it up quite a bit. कल निकल गए सारे ट्रेड ब्रेक इवन में या थोड़ा सा प्रॉफिट में, क्योंकि वो नीचे गिर गए ऑलमोस्ट 40 तक बंद हुई थी, 40 तक जहां पर हमारा एरिया था। हाँ। So let's see. maybe it's not found. So नहीं आपने अभी स्टेप 2 नहीं फॉलो किया, आपने मुझे आईडी भेजना है। आपको नहीं व्हाट्सएप करना है उसका स्टेप 2 के अंदर कि आपका टेलीग्राम का आईडी क्या है, आपका ईमेल क्या है, तो वो भी तो। दिस वन, हाँ दिस वन क्लिक करना। नहीं, स्टेप नंबर 1 जाना है, यहाँ पर आपको आईडी आएगा, इसको कॉपी पेस्ट करें और व्हाट्सएप करें। ओह अच्छा, आपको ईमेल, आपको व्हाट्सएप करें और अपना आईडी दें कि आपका ईमेल एड्रेस सुपर एरियस का क्या है। स्लॉट करा दे अगर आ अब लेके लाओ एक चीज ला अब बताओ। Order submitted.
आपको मैं भेज दिया, ठीक है, मैं उसको तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑटोमेटिकली मैं अभी आपको वो सिस्टम में ऐड करके अभी मेरे को पॉपअप सब मैसेज मिलेगा। हाँ अब आप जाके एक सेकेंड, somebody sending you a message. अब आप स्टेप 3 फॉलो करें। So, my opinion, where should we do this? I think we should do this upper range of R2 for selling. High to go low is the plan. Good morning. Hey, Jack, how are you doing? Long time, man. Yes, I was missing you. I see you on TikTok, you're saying done 125, done this. I see your feeds all the time. Yeah, been with Happy for a while. Yeah. Just mentoring. Yeah. I just need to sort out my charts and my Okay. what's that NBT? What is that flow chart? Flowbot? Okay. That's why I'm here today. No problem. See, look, I'm old. He made you put it up there. Yeah. I think if he had it his way, he'll put it on your forehead. Put it over here. It's they do a slightly different way of marketing. But I hope you're understanding how they are doing Nasdaq. I'm understanding. I think it's just my confidence. Because areas, and everything is just areas. It is. So I did 22,000. learn quite a bit from Happy. That's good. 22,130. He's an entertainer. He keeps it live, I keep it too serious. 22,130. Now good. Now good. So you've joined? Live was here also live there. Yeah, I'm live. So all of this is part of so whatever the floor is happening, you can do live. So nice to see you, brother. It's nice to see you too. You can play with that. I mean, Trying to get it going now. just see your videos over there. I'm gonna make speed tonight. They're all sitting in the car. I love that environment. Well, you're doing when you feel more relaxed. There you go. How are you? Oh, hi. How are you? Oh. Hey, how are you? Long time. It's been Quite a 5 months. I've been out of the country.
E9 So brighter in here. Oh, we put it. The light, no, it's brighter in here. So me, I'm telling you, at some point, man. We lost. I lost weight? Yes, we lost. That's good. Yeah, Eugene's like the hell out of me. The stress. Had a good way of saying. Yeah. All right, let's wait for the brief. A little bit. That's one thing that's happening. It's not. It's. You didn't ask before last one. Something like that time. Good morning, Ji. You know what? It's usually a stick. No. The door's closed. Who's gonna speak? That's right. Camouflage, all dark, so I think. It's right. Something. There's the- Scavenger. You go wrong here. He's going to get there. Last night. Alert. They won't believe it. Because he said to me like, which ones are you? Like, you talk to me. It's a little bit. Gold stock price is different than the ounce price. Gold, huh? Gold price, it is different than the ounce price. Yeah, this is This is. So Nasdaq से एकदम all time high पे है. sir, historic high. Everything is historic high. In the February. Nasdaq is all time high now. Yes, this is never ever has gone higher. Now comes under what's his name now? Trump's presidency, right? So We'll be talking about that for sure. On drive. What are you connected to? Okay. It's all the pig account there, then maybe $5. Like, they don't see the You cent. can tell I think the one is 6 cents, like, so when I was waiting, like, not the weddings. But if there's a large divergence, let's move it to the 30-minute chart. oh, everything has a divergence right now. Yeah. Oh, sorry. Yeah. Good morning, guys. Good morning. Assalamu alaikum. Namaskar. Sat Sri Akal. Hello, guys. Can you microphone check? Can you hear me? Good morning, Harleen. Good morning, Abbas. Walaikum Salam. Ranjit Clifford. Good morning. Manish, good morning. Magnet, please. Good morning.
Sunil, good morning. Sunil ji. Rakani ji, good morning. Amir, Walaikum Salam, good morning. Ajay. Rizwan bhai, Walaikum Salam. Sriyadali ji, Jyoti ji, good morning. Ashwin ji, Amrit, good morning. Everybody, good morning. Quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or our trading floor not attended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decisions, but not make it for you. We take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions, and don't think you made money yesterday, you'll make it today. Always be on your toes, always place your stop and always ready to accept those losses and do what you see. Don't do what you think, and treat this market the very first day you treat, and all the areas we have on our graphs or on our superindex.com are not buy and sell offer or buy and sell areas. These are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today, our S&P 500, Nasdaq, Dow, Russell 2000, diversion on diversion, means multi-diversion. 240, our chart is now in sell mode, price restore, upper band, 199, one tick less, 199 points swing to the upside. June 23, 22, 23, it just straight market is going up. This resolve of this Middle East problem, and also other thing that is taking everything to the up, especially cryptos will go up because today also 10 o'clock we have Fed chair speeches coming, but now he announced all the banks before they were not allowed. The banks were not allowed to enter in crypto trading, so now they said, okay, you can give loans or whoever comes, they want to do any transactions. So crypto will be booming, and it's for sure 98, 99%, 2030 Bitcoin is heading to $1 million. That's for sure. We'll see what will happen. If nothing blockage comes, it goes the same way what right now is going on. 2023, you see Bitcoin is heading to 1 million. Today, S&P 500, our high is 62.10, 62.10 to 23. Our low for S&P is 84 to 70. Nasdaq, our expected high is 22,700 to 780. Our low Nasdaq is 22,120 to 40. Basis up, pressure is down. Basis up, pressure is down. Right now at R1, if you see S&P 500 sitting at R1 area, and Nasdaq is sitting at slightly, you can say R1, above R1 area. Very strong push to the upside. High to go low would be a good strategy. And in my way, I will wait for my expected high today. I will wait for expected high because 240, once our market is out and expected high reach, that is a very good chance. And yesterday we're expecting huge push to the downside, at least minimum, we were expecting 80 something points, but now we are expecting 100 plus points to the downside on S&P 500, and same thing on Nasdaq as well. So Nasdaq 792 points, so it means we are expecting at least 400 points to the downside on our Nasdaq. I would say price is going up. The main reason is the Middle East problem solved. And that's why crude oil is going down and everything else is going up. And especially look at the natural gas is brutally going down. Natural gas, big push to the downside. Bitcoin crazy going up. Bitcoin very strong push to the upside. Future almost above 8,000, and spot is around 77. And the other thing here is currencies. So currencies went up. British pound yesterday went to our expected high for the day and paused. You see, even the Nasdaq S&Ps are not going down, and currencies are not going down as well. Because of US dollar. And if you see right now, British pound is just sitting at 80, very tiny push to the downside, 21%. That's nothing. 21% is nothing.
Canadian dollar is going down. Canadian dollar, yesterday inflation did not change. If you remember, I told you guys that inflation is less, it will go down. If it's high, Bitcoin will, Canadian dollar will go high inflation, Canadian dollar will go up. But inflation was normal, so that's why very close to our expected high for the day. Canadian dollar came down and still it's going down. Base is down, pressure is down. The euro and British pound is synced, same thing. Went to our high up there yesterday, and right now just setting at exactly same copy as the British pound. Crude oil is down. Crude oil, if you compare the swing, $14.40, and creates a diversion yesterday. You remember, morning we were expecting our expected low, but did not hit our expected low. It bounced back before it even get close to expected low. So today our expected low is lower than yesterday. So right now we have a push to the upside from the diversion. So it's not much. If I compare, when I said it's not much, it's compared to $14.40, but actually $1.65. That's a brutal push and very big push in just few hours. From this morning, after 4 o'clock, our crude oil came down $1.14. That's a big push as compared to previously. But now these days, you know, everything is weird. Everything is not flexible. Our index, nice yesterday, hit our expected high for the day. 100% hit our expected high. Bounced back down after 11 o'clock, pushed to the upside, reached to very close to our expected high for the day. And today also hit our expected high for the day and very close to our expected low for the day. Gold is going down. Gold went up $43 from yesterday low. It went to our expected low for the day. I believe our expected low was 18 to 10, so it went just 10. It means 8.3. Just $2 lower than our expected low, and bounced back up 42 points and out from our lower band. So that's why we have this push to the upside. And then HG, guys, copper, you must change your contract to September. Previously, our contract was, I believe, July. So change your contract today to September. HG contract change, silver contract change, Bitcoin contract change, Ethereum contract change today. So you have to change all over these contracts. Don't trade an old contract. Copper, not doing anything, just sitting at PP and just bouncing back above and below PP. Copper, yesterday went to our expected low. And same thing, silver tanked yesterday, went to our expected low. Silver, if you see after 10 o'clock, when exactly at our expected low, $1.20 put to the downside. And from our expected low, it bounced back up 81 cents. That's a big push to the upside in a day. Exactly same thing with the copper. Copper and silver move exactly same situation and same direction. And right now sitting at BP, only 38 cents push to the downside. Natural gas is going down, guys. Natural gas, $3.61 and still pushing down. Yesterday, actually this is our yesterday expected low for the day. You see how even yesterday expected low is today's our market hold very strongly. Well, I believe yesterday it was 630 to 590. I can't remember right now. If you have anybody have record, and you can see how beautifully we showed expected low of yesterday. Bitcoin is banana. Bitcoin is going up just from 5 a.m. Of yesterday is the push that we have. It reached to our exactly expected high for the day, $3,365 push to the upside. That's a nice push to the upside in just less than 1 day, or just 1 day area. Ethereum has more cushion, but Ethereum is just going up, but slowly. Ethereum right now just sitting at BP area. July contract to July.
both Bitcoin and Ethereum both are in our July contract. Again, guys, I'm telling you, 10 o'clock we are views, and also our speech is coming, so we have to be very careful after 10 o'clock. He will testify, and two things they will talk about. One, crypto, and in my opinion, the crypto will be the biggest industry in the future. So he will testify what's their future plan. And then we have new home sales. Green to go down, red to go up. Crude oil inventories at 10:30. So crude oil people, we have to be very careful. Low to go up on crude oil would be a good strategy. Please guys take the areas. If you have any questions, you can call me or you can text me. I will be here till Prague. Good morning. I am by holidays. Still stuck in R1. Nasdaq, हाँ, लेकिन वो वाली R1 में stuck है. Let's see. पूरी रात move ही नहीं हुई market. हाँ, yes. But Nasdaq R2 we can jump over the low level. है Nasdaq Nasdaq उन्होंने कहा है R3 लें, expected high लें, और same thing with ES, expected high की alert आया है, लेकिन अगर 580 पे माइक्रो लेते हैं तो आपको ऊपर 700 है, तो माइक्रो से स्टार्ट कीजिएगा, दो माइक्रो, क्योंकि अभी बहुत डिस्टेंस बहुत कम है R1 और R2 में ना, लेकिन R2 का 580 में, क्योंकि प्रॉब्लम है हिस्टोरिक कोई नंबर नहीं है, तो मैं निकाल नहीं पा रहा कि where is it gonna stop. So this time, whenever it makes a newer higher high, you're always kind of in a dilemma. Where would it doesn't have any historical value. So हाँ जी, ठीक है. So, पहले तो आपने जाके सब्सक्राइब करना, डेटा का पैसे पे करने हैं, फिर नहीं आएगा. Until then nothing will show up. So it hasn't given us any retrace. That's the problem. maybe closer to 580. No micro data. See? Debit card is 540, we're hitting R2 very soon, upper range. Let's see. So Nasdaq is inside R2 very close, but ES is not. ES is almost 20 points far, 22 points before. I'm short 3 micros from 56 MES, but it's 56 upper range थी ना उसकी, 50 नीचे 56 से 60 के दरमियान है ना R1. तो जब R1 का अलर्ट आया तो लाइव अकाउंट में 3 माइक्रो से शॉर्ट हूँ, बैठा हुआ हूँ. लेट्स सी. अब नैस्डैक कहाँ से, R1 की अपर लिमिट क्या थी आपकी, 500. कितने माइक्रो ही हैं, 3 माइक्रो. शुड बी ओके.
रुक ही नहीं रही because they know everybody is short, right? So it's deliberate. Now we are hitting the upper limit of ESR1. Just saying that. I don't think there is anything. भाई इसमें रियल टाइम डाटा यहाँ $12 का पे करना है फ्रंट पेज पे, जहाँ डैशबोर्ड है वहाँ लिखा है रियल टाइम डेटा। अच्छा 580 थे सर, बहुत करीब है 500। Okay, like 5, we are hitting our 3 points from R2 bottom range. Restart करा, restart करके देखते हैं। लाइव डाटा Green will be the election launch. तो 165 में हिट कर देगा, 61, 65 हाँ जा रहा है उस तरह भी। अभी तो 60 पे अपर रेंज पे है ना, तो 65 कोई नंबर नहीं है, हमारा नंबर है 60 पे। भी 60 पे उसने ऑलमोस्ट 60 से वापस आ रहा है ना, या अपर रेंज से 2 पॉइंट आए। the first one. So you just do this level. That's fine. Wouldn't I'm the captain of the Philippines. hold on. Okay, मैं तो लाना दे अंदर नहीं है। Order can be placed by administrator only. Order नहीं है। First, right? That's Yeah, what yeah. I There are have. funded and that's the option. Makes sense. Thank you. I thought you, maybe there was an option, but that's what I did. Yeah. And the Yeah. wire is the best way to fund it. Why? It takes too long with the way, if you do. Wire is how long? Wire is like literally 3 minutes. So if you do it like, let's say 11, 12 o'clock, by 4 o'clock, you'll have it. So that was it's like. कहाँ से आई थी? 548 से वापस आ गई। इट्स ओके। हाँ सबका Then they take away. प्रेशर डाउन का है, जो हमारे जो एरियाज है ना उसमें प्रेशर डाउन का है। Then the bank does 50 as well. ला रहे हैं 61, हाँ India, सर एक सेकंड सर, that account is gone, you've lost 15। yeah, this account is dead। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? नहीं नहीं ਲਿਖਿਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਓਨਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨੀਚੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆਹੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਾਂ ਪਲੱਸ 1375 ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਲ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੈਨੀਅਲ ਸਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਇਜ਼ ਗੋਨ।
दोबारा बनाना पड़ेगा हाँ जी हाँ जी, और $25 लूज हो गए सर खुद अकाउंट ओना वो करनगे ते दैट्स द रिस्ट्रिक्शन नहीं लेकिन ਉਹ ਰਿਦ ਆਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਪ੍ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਨਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਨੀਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਐਨੀ ਡਸ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ देखा चांस है प्लेस होगा तो अकाउंट इज नॉट कनेक्टेड फोन तो कनेक्टेड नहीं होगा ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਡਮ ਹੋਈ ਸੀ अकाउंट पॉलिसी में था। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ उस टाइम में नेगेटिव था कोई 20-25 डॉलर ज्यादा नहीं ਸਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਕਰੋ ਆਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੀ ਐਪ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਰਿਥਮਿਕ ਵਾਲੀ ਐਪ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ वाईफाई आपको हॉटस्पॉट से शायद करना पड़े ये वाईफाई लिखा हुआ सर इन्हें ऑन करो लॉग इन करो हाँ जी ओके एक सेकंड देना I'm in a trade right now ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਇਵਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ very soon because now it's slowly retracing I'm out from my trade as well ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਏ ठीक है that's it congratulations जी अभी वेट करें बिग बैन टुडे इज नॉट नहीं वेट करें अभी नहीं थोड़ा सा हौसला रखें it should come down at least it should come down to the S1 range should इंडिया ट्रेडर की लिक्विडेशन पॉलिसी का पेज आया है sorry इंडिया ट्रेडर की लिक्विडेशन पॉलिसी हाँ आप बहुत क्लोज टू मार्जिन हो गए हैं आपके उसने कहा है कि सर्टेन प्राइस पे जाके उसने खुद ही बंद कर देना है सो राइट It's coming down fast now. So now R1 is officially done in terms of your. So if you took R1, I took 5 points from R1 ES. So as I said, everybody in the morning right now, that I was short from 56, 57 area, 56, and then I got out at 5 points from there. Because double divergence on ES, that mid bands were risky. Would 470 from
Nasdaq be valid? That should be working as a support, Yeah, like for long. but pressure is down. Remember, in the last 5 days, I'm not always never been a long guy, especially when the park price is there. So I'm short just happens much faster. Probably because it came down. Yes. कित्थों ले नहीं सर सिर्फ 550 तो गिर रही है सर, बहुत उत्ते तो नहीं है, क्योंकि बहुत उत्ते में कहना 250 पॉइंट ते आए ना, या S1 ते कर लो यार, अगर 340 गुड सपोर्ट बन सकती है, लेकिन 500 470 बहुत, अगर ते सिर्फ इन एंड आउट हैप्पी की तरह होना है ना, 5 पॉइंट लेके ओ फिर दैट्स द फास्टर वे। हाँ, क्योंकि जब प्रेशर डाउन हो ना, मैं अपना वैसे उठा लेता हूँ लॉन्ग ट्रेड से, तो let's see, all right, okay sir, एनी डस्ट हैं जी, मैं आपको अब तो आपको एग्जैक्ट गाइड कर देता हूँ, क्योंकि इस कंपनी का, सारी कंपनी उसका एक रूल है। रूल ये है कि अगर आपने $200 प्रॉफिट देखा और बंद नहीं की ट्रेड, और वहां से गिरने शुरू हुई और -500 गई, तो वो 700 को रिकॉर्ड करेंगे लॉस को। मोस्ट लाइकली ऐसा ही हुआ, आप पहले प्रॉफिट में गए और वहां से गिरना शुरू हुआ, उस वक्त तक आप ट्रेड बंद नहीं कर सके, ठीक है। तो जब वो बंद किया उन्होंने, तो वो उन्होंने प्रॉफिट भी काउंट करते हैं ना। ये सारी कंपनीज, मैं इसीलिए कहता हूँ फंडेड में आपको जो है इनका ऑर्डर मोस्ट लाइकली आपने वो फिर ऑर्डर क्लोज वाला मसला नहीं। हाँ जी, 9282 231 615 एक्सेप्ट कर। Just need to have patience. So anybody who was in an R1 trade, they got out. Okay, sir. Back into R1. I think the lower level of R2 of Nasdaq is sort of done, would you say? Yeah. The lower, because 448, right? So it's 2 points away. इतने हैं बाय करेंगे, तो बाय करेगा, हाँ 150 currencies Then cross another one. लॉग इन करें जी इसमें, कल जो हमने दोबारा 60 पे सेल करने का फायदा है नहीं, दोबारा 60 पे जा रहे सेल कर सर 60 आया तो खत्म हो गया, ए एरिया डन हो गया।
हाँ लेकिन एरिया डन R2 ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਰਨਾ ਮਿਡ ਬੈਂਡ ਤੋਂ 30-20 has a divergence. Just watch that. Strength is not going up. You have a higher high on 30-20 ES. मैंने कैंसिल कर दिया हैं? हाँ हाँ नो अकाउंट वर फाउंड तो अब आपके पास अकाउंट तो होना चाहिए ना. Two minutes news, somewhat news. just to stay up आपको make sure you have choose the correct value of this account मतलब मैसेज आ रहा है मुझे पता है वो रिमूव करने के लिए हाँ, आप वेबसाइट में हाँ मतलब इसमें निंजा में लेकिन आपके पास कोई एक्टिव अकाउंट होगा तो कनेक्ट किसका है किस मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक्टिव अकाउंट किस कंपनी का है. ठीक है तो आप उसमें जाके बुलनॉक्स पे कनेक्ट कर लें तो लेजेंड में ना. अच्छा ठीक है. नहीं हमने कल बनाया नहीं था इसका. सेव नहीं हुआ नहीं सेव हमने क्रोम में बनाया था. इसमें आपके पास क्रोम है बस क्योंकि क्रोम कई दफ़ा सेव कर लेते हैं. हाँ यहाँ देखते हैं पुल नॉक्स ये क्रोम में सो है. ये है आप इसकी फ़ोटो ले लें जस्ट इन केस. लॉग इन कर दो Yeah, for me too. Even if I could do this. everything साइन अप. is right. हाँ जी हाँ जी. You're being played. Huh? NQ. Sorry. You got to put on to NQ. Oh, there is nothing faster than NQ. No, but problem with NQ is you only do areas or nothing else. Maybe ES, sorry, with divergence, but nothing else. क्लाउड इंफॉर्मेशन वाला हाँ जी. Actually, looks funny on you. Not what you do. Why is the market good? No, you're not connected. You don't see it connected.
All right, somewhat news, but it's not crazy effect. New home sales are down. So new home sales are down. Again, touch the upper limit of. आपने 2 माइक्रो बाई पे लगाए 470 ठीक है 499 तो आ गया ठीक है सर बस सेफ डन हो जाएगा चालू हाँ हुई है देखो 30 सेकंड में अकाउंट नंबर 2 अब मैं सिर्फ आपको बता दूं कि आपने देखना कहाँ है कि आपके पास कितने पैसे हैं सो या यू शुड वॉच दिस टू सो ओपन आर ट्रेडर अब मैं आपको आप तीनों के पास जिसके पास भी बुलनॉक्स का अकाउंट है you have to make sure you have our trader app installed on your phone in case Ninja goes down in case nothing there's an emergency exit आपको emergency exit भी तो बताना है so download an app called Rhythmic Trader Pro Green इस कलर की ऐप होगी this app helps you get out of a trade if you're stuck okay by the time you pick up the phone call somebody आपका ट्रेड निकल चुका है स्पेशली या अगर आप 458 पे आ गए हैं आपने बंद करना है तो these are the things that R Trader Pro हाँ वो जो रिदमिक वालों का है जिन्होंने रिदमिक करना है वो R Trader Pro करेंगे When you log in, automatically Ninja will disconnect it. yes correct so one login at a time One login. Rhythmic trade. R Trade for Rhythmic it's R Trader Pro the green app and for the other one is your Tradeovate So this one top one? yes that's the free app if you're doing anything to do with Rhythmic so the app is called R Trader Pro ये वाली सर ये वाली R Trader हाँ जी इसको ले Rhythmic R Trader Pro So it's connected to my old APAX account. that's fine so just put in your Bullnox username ID or because many companies you just for each one you will log in with your own username password वही डालने जो कभी डाली थी नहीं वो जो आपके ये वाली जो आपके रिदमिक की वेबसाइट पे है ना यूजर नेम पासवर्ड ये आप जाऊंगा होम पे ये पढ़िए तो ये आपकी है यूजर नेम पासवर्ड हाँ जी anywhere in the world it's 100% correct so but yeah But what I wanted to ask you is, when we come in, we can go to talk about the Wise account. yes So would it be Wise? no not Ninja Wise no It won't work, right? only Wise is good for funded that's it nothing else Because in UAE, it is different. yeah you can wire if you're worried about slightly tax but then sign up on Ninja with your UAE ID UAE bank everything to do the moment you will add Canadian information CRA gets involved so just like GFF sign up with your UAE But I should wait to, there. you can have 2 accounts one from I there won't do that. yeah that's Keep that. This was here when I go back. yeah and just use that So I'm gonna be there. no problem lots of options
So it's holding that 500 number, 22,000, बड़ी strong. क्योंकि R1 is the हाँ जी क्योंकि या फोन पे चलेगा या ऐप पे चलेगा या निंजा चलेगा, तीनों च एक है। नहीं रीस्टार्ट नहीं सर, कनेक्शन पे जाओ, तो कनेक्शन पे बुलनॉक्स कनेक्ट कर दो तो उधरों देखना लॉग आउट हो जाना है। कनेक्शन अच्छा थल्लों रिदमिक पेपर ट्रेडिंग सिलेक्ट करना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑप्शन है ना, शिकागो नहीं करना, रिदमिक ठीक है, बाकी यही होना चाहिए। आज मैं कर रहा पर हो नहीं रहा। एक सेकंड में दिखाना फोन है BX 75387 LKG PAKFL MX G स्पेस तो नहीं है, yes 75387 LGK P बटा A सर K छोटा है, PAK वाला ना K छोटा है। हाँ ये देखो ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਲੈਟਸ ਸੇ MES ਜਾਂ ES ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, MES.CME ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਲੌਗਇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਮਾਈ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, फिर उधरों लॉग आउट। Any time it should break this. We're waiting. It's been a couple of days like this, isn't it? Sorry? It's been a couple of days like this. Oh, sir, 5 days up and the moment he said ceasefire. So ये दोनों छोटे ने कि एक बड़ा है? नहीं खाली एक बड़ा है सर, पहला बड़ा है, दूसरा छोटा है। Is Trump speaking? Somebody just said. Oh भाई इसके मुंह से कुछ इधर उधर निकल गया। सारे ट्रेंड आगे पीछे हो जाएंगे। Sorry? No, everything is planned, but हमें जरा 4 के बाद बुला करे यार। Yeah. ये आ ही नहीं रहा था मेरा तो बन गया। दोबारा ट्राई करते हैं। Let's see. L capital LG K कैपिटल है P capital AK F L capital M X capital। आगे सर ये मैं सारे बंद कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो स्टॉक्स हैं उन पर ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेट कर रहा हूँ MES.CME। ये आ गया। तब यहाँ पर आपका अकाउंट्स 2 शो करता है, 02 01 जितने भी आपके अकाउंट्स हों वो देखें। आपको कह रहा है कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया हूँ इधर से, तो जब आप इधर से कनेक्शन में जाएंगे, किधर गया आपका, so किधर गया निंजा। So if I connect to this app,
या ऐप चलेगी या ये ऐप चलेगी या फिर अभी मैं जाके निंजा में आई विल गो कनेक्शन बुलनॉक्स, तो आप देखेंगे इधर से लॉग आउट हो गया, राइट? सो बट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी यू हैव दीज ऑप्शंस फॉर यू टू मैं सिर्फ आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको पता हो कितने मेरे अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है? Trade of it. Trade away, that's why this is 25, that's 50. Because trade give it allows you 2 logins. That is the good one. So, but that's $50 account. This is a $25 account. 25 allows you 1 login. Oh, now is the 25? No, Bullnox is 25. Last time I gave the 35. Yeah, so they like 5 to No. this is US. Yes. So हमने क्या करना log में गया. So let me give you everybody since they're watching this in case. Check your available max loss or मैं नहीं ला रहा पोस्ट लेवल सर डर गए सके ये ना पैनिक आ जाता है, ये भाईजान टीवी पे आ जाए ना तो पैनिक आ जाता है. ओपन for rhythmic open R trader. 4.5 points You took it? to my. Then You scared me a little bit. no, I didn't. He said Trump is coming. No, I can see that. Yes. You never know what he's going to say. He's an idiot. Yeah, I took the gambler. 2 micros. Account balance minus auto liquidate threshold equals available. Trump Up. says he thinks Israel-Iran war is over. open the ball will pick up with the over. गिर रही है जी 74 पे 72 पे 80 तक आई थी दोबारा 70 पे जाके 84 तक मैंने देखी. अब वो देखे ना बिग बॉस बोल रहा है और इधर लाइव इफेक्ट आ रहा है आपको, तो हम क्या करें इसका? हैं? एग्जिट करना हाँ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਕਿਹਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਟ੍ਰੇਡਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ. 2 ਕਾਲਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ 25000, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਟੋ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ, ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ minus auto liquidate threshold is your available balance. So because it's cheaper, that's why they charge you. The ਤੁਹਾਡਾ account balance ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ 25000, ਠੀਕ ਹੈ. auto liquidate ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ 23500, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ $1500 ਪੂਰੇ ਪਏ ਨੇ. ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂ ਕੈਨ ਲੂਜ਼ ਇਨ ਟ੍ਰੇਡੋ ਵੇਟ. ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਲੈਜੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਥੋੜੇ ਸਸਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਓਪਨ ਰਿਦਮਿਕ ਆਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਪੈਸੇ ਆ. ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੰਡਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 6056 ਤੋਂ ਸੈਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਥੱਲੇ ਗਈ 6053 ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ $150 ਬਣਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ 6058 ਤੇ, ਇੱਥੇ -100 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 100 ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ 150 ਵੀ ਲਿਆ.
उन्होंने -$250 ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਜਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ they don't want you to greed ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ 70 ਵੈਲਿਡੇਟ ਹੋਈ oh very good यार वहाँ 20 पॉइंट दे गई 70 बड़ी बात है यानी ऐसा हमारा एरिया फिर रिस्पेक्ट हुआ once again Came from 80 points difference, but yes okay Powell is always also speaking. oh, is it? So the both guys now they're enemies of each other. By the way, so I think this is deliberate because uski speech se upar apni speech le aaya hai. Like you know. So हाँ जी all done हो गया. इन्हों बंद करके connect कर लो and you're all done. So. फूड मार्केट थल्ले आनी दोनों सबसे bearish. I think my next will be the blue now because cheaper. Huh? Yeah, but this. I did, that's why I log in. No. I cancel the subscription, but I do the another account, same account. So. You could do your. Yeah. I have a few $3 left. I can watch still what. Sorry? I have a few $3 left. It's okay. You can micro it, no problem. Yeah. Anybody who took a mid-band trade is done. So the price came to your mid-band. Both charts were magenta. So right here, perfect example. Bearish, price is pulling up from a lower low. You sold right here, you're done. 2 points are done. Mid-band is your entry. There's no magic to it. And I think that gave us from 53 down to almost 49. So a couple of points going down. So those that are doing trend trade, mid-band is your entry. Next year, she should have. So keep that one, lose it. So again, the price is stuck in that 500 range for. And previously, 3020 has SRES set up. You had a higher high, higher low, lower high, and that kind of gave us an idea that it will go down from there.
I think it should go down to 6,100. That's a realistic number. But when? That's the question. So, because that would put us in around S2 zone. But we have lots of, before it gets there, many, we still have S1 and then S2 before. हाँ हाँ क्लोज करा के नु बाय करा तो फिर नहीं क्लोज दबोगे तो मार्केट की तरह है ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਲਿਮਿਟ ਲਾਓ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ नहीं ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਇਹਦਾ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕਰਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖਿਆ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਬਟਨ ਦਿੱਤੇ 479 उसमें क्लोज ना हो यूज ना करो ना तो ठीक ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੈਣਾ Our night session is what? 38. So let's see if it goes and tests 38. Our pivot is sitting night session low for in ES का 6138 और उधर उसका 384 है भी नैस्डैक नहीं ना गिर रही तो उस वजह से I do the micro, but it is not updating. Timing not updating. So, but micro 9.6%. You're watching June contract. Has to be September. So September. Again, I need to add the September. Huh? Correct. Same. Same. Back into R1 zone. Nasdaq back into 500. Just roll over, huh? Just roll over and then save it one time. No update, and then save. Close this one, then save it. Okay. I got it. Lot of things need to learn. Some basics operation. Every day something learning. So that's why the night session is good support because that'll put us somewhere where 384 S1. I'll wait for S1 at least S1. Let me see where the supports are. Because first it has to enter the value area. Value area is sitting somewhere for ES 45 to 15, and then if it enters, it will fill it.
To buy, I'm going S2 for Nasdaq, not S1, because S2 is good. 60-minute mid-band is there, and you have previous week's lowest low of red line around there. So quite a bit of multi-support is there. Last week is high is there as well. I'm skipping S1 for Nasdaq buy. चलो देखते हैं कोई ट्रेड आ रहा है। मैं ये समझ रहा हूँ, मैं तो ये करना मैं इधर से भी कर सकता हूँ। हाँ जी या वो भी ठीक। वो फिर डिस्कनेक्ट हो गया होगा या कोई मसला होगा, तो इसीलिए अगर पहले देखना है कि वो नीचे ग्रीन जरूर रहे। यही है सर, नहीं यही वाला जो 548 है। एक सेकंड, नहीं उसको हम कहते हैं ऑलमोस्ट के करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में। नहीं लेकिन आप क्या ऑटो कनेक्टर परसेंटेज आ
बट इस तरह से देख रहे हैं ना प्राइस देख रहे हैं और मैं उन कह रहा हूँ कि थल्ले आके प्लस आ जाता थोड़ा कंट्रिक्स फिर ऊपर चले जाता फिर माइनस एकदम सीधा लॉस हो गए सर आपने मैं ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ की इंपोर्ट कर दी ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸੈਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸੇ ਬਾਈ ਵਨ ਤੇ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰ अच्छा भाई जी अच्छा प्रॉब्लम ये है ये भाई रिथमिक का कनेक्शन या इपेक्स का हो सकता है या बुल 614 एक ही हिट कर देगा तो बाय पे जाना मैं कह रहा हूं एक बारी माइनस प्लस से जाता है और ट्रेड चल रहा है प्लस से जा रहा है फिर माइनस कनेक्ट हो जाता है नहीं वो तो जब तक उसे क्लोज नहीं करते एक्टिव नहीं आता तब तक नहीं होता तक यार होगा यार क्लोज करोगे तो होएगा ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਈਦਰ ਦਿਸ ਔਰ ਦਿਸ ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਵੀ ਕੀ ਆਈ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਕਰਤੇ कैसे पता है जाता है क्योंकि मैं क्योंकि वाली की करना स्पेस रह जाती है कॉपी पेस्ट तो वो मैं कई दफा एरर देखा है अब कुछ ठीक होता है Yes. That you want? That's only this. You automatically this one will already connected. I said it to you. You still remember what should You also connected, nothing did to change the same account. It's exactly. I just haven't done it in a long time. Here's my multiple accounts. This time. That's up. Apex connects up Apex and take Apex 50. S2 we will be looking at least 270. No. कभी है ही नहीं नहीं वो तो नहीं एक बार तुम क्लियर होते बात ये शुरू जो पुट्ठी बंदी की लड़ाई से क्लोज होती है लड़ाई करो ये ऑप्शन होती ही ना फिर क्या करते अब फिर से वही बात है और फिक्स करो इसका भी कार्ड एक्टिविटी चल रही है इसलिए मैं माइक को कर पढ़िया जे नहीं करते तो फिर Yes. I just put my balls on it. Do I No, take that? yeah, you need to go to Rhythmic Paper Trading, different company. Yep. And just double check, verify this. Okay. But Okay, no, it's everything else. yeah, that's it. I try tomorrow. एरिया जनरेट करो
ऐसे को ज्यादा भी माइनस चले चलेगा, लास्ट पॉइंट अगेंस्ट चलेगा, तो मुझे कुछ भी करके किसी को ऑर्डर ही लेना है, जो उसको ऑर्डर पे मिल गया और फिर इधर भी क्लोज कर लेना। Stuck on this one bar. चार्ट्स लेते थे इधर लाके छड्डिया होया बाय भी कीता सेल भी कीता भाई वो बेटर कर जाएगा फिर मान लो See you on next week. Take care, G. Okay, some for Sunday, Monday, Tuesday. No problem. So would you sign, is there a way to sign off on the phone or you just close it? You just close it. There's no like creative way to kick one off. No. This allows you just single login. Hello, thank you. से बात हुई थी 4,000 कर लेते हैं तो वो कह रहा है कि और मेरे को कंप्लीट ऑफर में से भेजो फिर मैं बताऊंगा आपको अगर हम पहले पूरी ऑफर कर दिए ना सारे के सारे डॉक्यूमेंट साथ में लाके भेजते Completely annoying market. It's look at 1510. It's messed up. सब कुछ चाहिए उसको जो करवा सकते हैं ऐसे The market is waiting for him to speak, I guess. Not doing anything. सारा कुछ चाहिए उसको तो वो मैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आज वो आपको बुला के भेज दूँगा और चारों बंदे के साइन होंगे उसके ऊपर ठीक है तो मेरे को ना चारों के ईमेल वो कर देना सर ठीक है बाकी संडे फॉर पार्टी की गई थी और इसके लिए पहली जुलाई से बहुत बड़े इंटरेस्ट है फिर आपको कैसे बनेगा पिछले बड़े पर्सपेक्टिव अगर सही है मतलब बैंक के ऊपर सब कुछ लगा Hello. Hi. Yes. Yes. Yes, it is. Thank you, man. करने की कोशिश करता रहा Assam ji.
Come on, some big buyer come into the market or seller, move it somewhere. 500 seems to be the number I just have. June 20th. 21 जा रही है जी थोड़ी थोड़ी ऊपर वापस बैक इन R1 some buyer came Something wrong. $21,896 You guys been through my So, the first time, second time, no, second time, this time we didn't. We did it briefly. No, you didn't. You didn't. No, you didn't. I did invite them to my wedding. I didn't have. After we were sat in the juice. Privacy. It's a great one. It's a big. Go to the. That's awesome. It's a really. So, he's a fantastic. I think he's really taking concepts. Food is big. People are small. I understand how some people. These are things that expand. Yes. So she's looking at this one. I think there's some outside. She's learning. She's so good. She's walking around. It's amazing. So big stuff. 393 Order place with 2 times. So now she's expanding.
तेरे को पता नहीं ना मैं तो कुछ नहीं इंटरनेट कनेक्शन वो नहीं कर ले बंद पड़ा बंद कर रखे और रुकते रहते ठीक कर वो भी बढ़ रहा है मेरे अंदाजे से हेलो हेलो ये मेरा फेस लगेगा तो दोस्तों मेरी बात है कि मैंने उसको बताया था कि आप यहाँ पे एंकर कर रहे हो So your mid band has given 2 points. Both green price came from higher high. 2 points are done. फोर लेवल वाला डर है फोर लेवल वाला डर होता है बेसमेंट किसी और को ही है तो किचन नहीं भी मिलेगी घर किचन नहीं मिलेगी हाँ फोर लेवल है ना तो तभी सारे तीन फोर में से तीन लेवल आपके पास बेसमेंट में लग गया हाँ ये पुरानी घर कितना बहुत डिफरेंट होती है 48. हाँ इनकी थोड़ी डिफरेंट लेआउट होती है ये अगर आपकी नहीं शेयर कर सकते तो पैसा नहीं था ठीक है नहीं कोई बात नहीं It's funny, I see this. There's one that I told you. I started to see it in front of me. I'm still there was like. So you said no to do it. I think it should be or no. I should have been on Monday. So we need we'll try. $30. no it's not hello I'm outside I think there's a lid sphere is some Hi, Frank. Have a great weekend. Take care, G. I will see you on Monday. No problem. Okay. Well, strong edgy price here. Nobody wants to buy, so Nasdaq is just up and down in our weather.
Powell testimony still going on. अपने को तो लगा नहीं है ना ऐसा होता है तो होगा क्या तो नहीं करेगा सामान ये नहीं सामान दिखाते नारियल की गाड़ी नहीं लगी सामान क्या नहीं ये होता है अंदर ही रकम कहता कुछ है ही नहीं चटिया कुछ हो रहा नहीं ना कुछ होने में दिला दो और मैं लगा है मैंने बंद करके जाऊंगा बड़ा मोटा हो जाए प्लस और ये कुछ लाभ नहीं बैठे मुझे तो बहुत लग रही है टीचर की थले जा रहे हैं खुल रहा हूँ क्या everywhere the close have close इसको लगता है इसको डरा नहीं है got it करने की तो वही मचा रही बेटा ने आएगी नीचे कुछ पर तो साली है उन्होंने लंगाना है कभी पड़े स्टॉक भी कर सकते हैं ट्रेड स्टॉक से ही करते मार्केट कभी नहीं होती है ना वैसे तो शाम की मार्केट है ये वो दोनों की टेस्टिमोनी हो रही है ना तो
स्पेशली कहीं जाके फंस जाए ना ऊपर, वो चढ़ती 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 वो उधर रेस्ट कर रही है। वे वही 500 के इर्द गिर्द, R1 से बाहर ही नहीं आ रही किसी। जीरो तक चल जाता, जीरो तो ठीक है, लास्ट नहीं लंबा बता रहे ना। गया भी नहीं आना। चिप्स का भी $4 डाला। अरे यूरोप को ना बांट रहे हैं यार।
अब थोड़ी थोड़ी आ रही है अभी, थोड़ी थोड़ी। नहीं आ रहा ना होपफुली गिर जाए जी। Finally. Some action. I was stuck in R1 for longest. How low do you think it'd come down to? At least it's got to get to S1 before that becomes your first support, but we have quite a few mid bands to go down. The first mid band is sitting for ES 52. You know, Nasdaq, I don't look at anything except Nasdaq. I can tell you 250 is the number. 250. Until 250, I'm not touching Nasdaq in a buy. I'm guessing it could reverse to around 415. So Nasdaq में 250 maybe could still do a short, right? नहीं buy करूँगा ना S2 के S 240. Okay, 2. Oh, that's too. I got confused. Okay. Yeah. और कितना तो उसी से 47.50 पे मैं बाई भी नहीं था यार सेल सेल के लगे हाँ 143 तला अरे Sir, mid band 240 का chart.
Say painful slow. Yeah, but so is Trump. I mean, Trump must have finished by now. I think he's done. He's finished long time. He's finished. We're talking about the powers. Yeah. The powers. All is still talking. Oh, there he is. I remember the last time we were so it's like, but this guy does not talking. I think Trump needs to be gagged. There should be, well, he should go in for a gag order for himself. That's an example. It's okay, but myself. I'll do 4. I'm okay to say whatever he wants. Oh, look at it. It's really moving. You just sit wait and then you wait for 1 hour just to do the other one. Yeah. Can't take your eyes off. क्लोज आ गया मेरे ट्रांसलेटर Yeah. That's why it's not here, so I stare at it. Yeah. राफे भाई जो 450 है डेली लिमिट राइट आप बना सकते हो ये ग्रोस पे है या कि नेट पे या नेट पे नेट Hello. Hey. How can I? Okay. Okay. Yeah, just and then see if I can speak to them on your phone. Okay. Thank you. Yes. ट्रेड नहीं
Yeah. Yes, hi. I think she wants to go home, and I'm the parent. Perfect. Thank you. Take care. Bye. Bye. See, if you combine Nasdaq with divergence and overbought, oversold, still has worked. Like since the day we've been sitting 1,000 days. Yeah, there is never has been a change. Price goes up, comes to mid-band, goes back up, short from there. 5 points guaranteed. Let's see if I can pull Nasdaq and try to do this on a live count. So there is a video that I made. It's called, because a lot of time when you're sitting and there's nothing to do, what to do? Only you can switch into Nasdaq and scalp a little bit point. So this trade that is somewhat profitable, meaning at least 60, 70, 80%. Not all the time, but this trade doesn't come. So here is your Nasdaq. Here is 30-20. Like whatever you see a divergence. So first let's define what we are trying to do, and then we will figure out how the chart is working. So what is a divergence? Price goes up, makes a higher high, comes to mid-band, touches the mid-band, goes back up, makes another higher high. That's your chart. So market is Nasdaq or MNQ. Chart is 30-20. That's a normal mid-band trade. However, your strength will look like this. You will go to overbought, sold, like that. Your strength did not go up. So some users, let's say, let it go up to 35 plus points. Let it climb up. So what is the point here? 20 points. 25 points, 30 points. Let it go extreme overbought. कई दफा Nasdaq में speed आ जाती है. So you can watch this chart, 30-20, and let it go as high as, so this 9 would be like 99.9%. So you have the RSI at 99.5%, at least 35 point swing, up or down. Let it touch mid-band, let it go back up, and then you short. You short after the swing. Not everybody's on the same page. Short from the previous higher Previous high. ये देखिए, ये यहाँ पर एक higher high आएगा. जी. तो ये जो previous number, let's pick a number here. Let's say if it gets to 22,450, you don't know how much that swing is going to be, 51, 52, 50. Let it go as high as possible. Let it come down and make another higher high. And then you short from this point. And that's called a overbought, oversold, RSI divergence trade. Is that from the previous high, right? Previous high. It has to break previous. See, this was straight overbought, oversold. Things got overbought, and then things got oversold. But in this one, it's not higher, right? It's not. It's not. So this trade has to only work if you have a higher high, then another higher high. And when it comes to the previous higher high, then short. Sell. Exactly. But if it keeps going up, no, it won't. We've back tested it. Rarely it will go up. Eventually, if it goes up a little bit, but eventually it will come down. What are we after? 5 points. Nothing more. 5 points. So if you want to scalp within Nasdaq, this is a bit of a safe trade. Ridiculous swings. So 5. So scalping Nasdaq, 5 points.
Same thing, if you want to do this in lower low, price went down, lower low, lower low, lower, goes up, touches midband, makes another lower low. Generally, you can do a buy here. These work really good in resistance zone. क्योंकि उसने अब नीचे आना है. These work really good in support zone. So based on this is it, you can back test it. आप 30-20 खोल के बैठे रहे. एक दफा आएगा कि वो 40 की स्विंग देगी, मिड बैंड का वेट कर लें. तो ये ट्रेड हर वक्त नहीं आ रहे. Meaning they will come maybe because sometimes you're sitting and you want to do at least do a safe trade, not a. So, but there's a full video for it on the full video. It's called the RSI divergence trade. Is this on your TikTok? Yeah, no, it's on your YouTube. Yeah, right here. So if you want to play divergence, so go on YouTube. I'll give you the exact video. So let's look at our channel. Super areas. I'll go. So under videos, let me check. Right here, this video. It says higher high, lower low, overbought, oversold, ninja trader, divergence trade on 30-20. So if I look at this, so I gave a full example. Price went up, all the way up. Touch midband, went all the way up again. The moment you broke, you showed it right here, look how many points it gave you. So this is called the divergence trade with, over. See what happened here, overbought. So market went up one direction. Touch midband, yes, touch midband, then went back up. See here, it did not go up. Your strength, so that's what we call it divergence. So this is higher high, but you don't have a higher high here. So you spot this, good time to make 5 points. No, so this is called an overbought, oversold divergence. So she came after maybe 6 months and she took this trade and she did. This is called, you have a full video, step by step explains it. $400 one day. And I think in the lower low directions, I explain it too. So this is again, price came down, touch midband. Even if you bought it somewhere around here, eventually you will get out in profit. So more chances in. So this is a divergence trade. And so price came down, but look at the strength did not come down. So, but this is 30-20 Nasdaq if somebody wants to really play scalping trade, meaning go in 5 points, get out. So the video is called right here, higher high overbought RSI 30-20 Nasdaq. So something new. I just got reminded by her that hey, still she's taking that kind of trade. She's only taking those trades. तो मालूम सी के क्या हुआ कुछ बना रहे She's got some health issues. Oh my god. But No. Because she does this trade a lot. she does 15-10, not 30-20. थोड़ा सा और तेज 15-10 मैंने 300 में बना के लाया $100
ये बस कुछ बना आज नहीं, वो 548 तो आ गई। अच्छा जी, उन्होंने, मैं थोड़ा कंफ्यूज करता, उन्होंने क्या यार R3 ते चले जाओ, R3 दूर सी, लेकिन मैं 580 ते तैयार हो रहा से। ये देखिए उन्होंने एक नंबर कटिया 822 वाला, वो हाँ वो लेकिन बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, तो उस ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਾਵਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਵਲ ਤੇ ਟਰੰਪ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ R1 ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। Two micros. Two minutes. Learning from you. It's okay, it's okay. No problem. सारे डरे हुए हैं। चल सारे, क्योंकि वो उतर ही नहीं रही, उतर ही नहीं रही, उतर। नंबर दे रहे हैं 736 ही है, 22,736 they are capped on and इस ईयर का जो साउंड तो आई है ना इस 2025 में वह पॉइंट आएगा 22,736। I think trader will just create a 22,866 mid band पे आ रही है जी प्राइस। Let's see on Nasdaq. Yes. Okay. Yes, boss. सर मेरा ख्याल है अभी ट्रेडर वेट ग्लोबली डाउन गया है। ट्रेडर वेट खोल के देखें, ट्रेड आई थिंक जस्ट वेंट डाउन समथिंग। I'm trying on my live account to see if I'm okay on a live. This is nonsense, annoying. No, right now, some users can't close their trade right now. ट्रेडर में चल नहीं रहा है आप जो जैसे आप सब Nasdaq का सेटअप बता रहे थे, वो हाई हाई से आके नीचे उसने मिड बैंड टच किया, तो नीचे मिड बैंड टच किया।
See, my chart is stuck on Tradeovate. It's not moving that line up and down. I disconnected. Acha, disconnect, reconnect. Let's see. Next time till minus 300 plus 400. So just that. You came up with such a long time. Why don't you make the market move? Look, I'm making it move. It's running down. Yeah, I guess now. You just have to ask. Okay. Oh man, back up again. So went down to 40, very close to night session. 38.20. Yeah, yeah. That's true. Yeah, I got it. मार दो फूफा को सर R3 पे मारूंगा R3 तक जाएगी आप सर जो इस हिसाब से चल रही है चली भी जाएगी काफी नीचे है R2 तो बड़ा उम्मीद सी होता तो क्या के हम वो 548 से ही नीचे सोच रहा था कि शायद एंटर कर जाऊं कुछ हो जाए कई दफा ना भागते हुए उसको पकड़ना पड़ता है लेकिन कई दफा भागो तो वो रुक जाती है उल्टा गिरता बना नैस्डैक के साथ थोड़ा सा ना बाकी रसल दे ठीक है सर बाकी सारी चीजें 15 मार्केट घूम रही हैं रसल आपने लिया आपका एरिया ठीक एक दफा एक दफा एरिया आना आ जाए ना तो मार नो प्रॉब्लम जी नहीं तो अपने लाइव अकाउंट में 152 बना के ना चुप करके बैठा क्योंकि वो ऊपर से 60 से मैंने शॉर्ट कर दिया था 50 उस वक्त क्या नंबर चल रहा था एग्जैक्ट नंबर 58 तो ले आ सी ना हाँ मैं ES 5 माइक्रो उत्थे छड़ते मैं क्या यार Yes. All orders are working. Yes, नहीं कुछ भी नहीं है आप हैं आप लाइव में हाँ जी लाइव ट्रेड पर मैंने बैलेंस पता नहीं भी मैं सारी पोजीशंस कुछ भी नहीं है अब रियलाइज्ड आप फ्लैट ओके पोजीशन तो ये आपका बना कुछ नहीं है कोई कुछ नहीं मैं वो स्टॉक कोई है कोई बात नहीं कोई बात तो यहाँ से आपको पता लगेगा ओके कि आप किसी ऑर्डर में ये पोजीशन लिखा फ्लैट लेकिन इसको भी दबा दें Yes, इसको भी exit दबा दें एग्जिट है ना everything is refreshed. तो इसीलिए ये जिस तरह ये भी मेरा लाइव है तो अगर वहां ना चले ना हाँ जी निंजा में लॉग इन करके ये लिखा हुआ ट्रेड हाँ जी ठीक है यहाँ से भी आप अपनी पोजीशंस बंद कर सकते हैं तो 3 चीजें हैं निंजा की वेब ऐप ट्रेडोवेट ऐप या ये ओके थैंक यू नो प्रॉब्लम
आज आ रहा है, like I have to. जाना ना हाँ जी सर, जाना था तेना आ जाओ। मैं ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਹਾਸ਼ਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ मैंने उन्हें ही आज लेके जाना। There you go. How far? Okay, thank you. Okay, bye. $30, 15.10 has a divergence on ES. All that divergence says that midband may be risky, that I'm heading into green zone. That's all. Doesn't have to like respect it. But so if somebody's taking that midband, that's a cautionary line. That please, my strength did not go down, so be careful. 30-20 के मिड बैंड पे वो भी करीब करीब ही है यार, ये बॉक्स भी उधर ही आ रहे हैं 40s। एक पॉइंट तो दे ही देगा। Asham ji, how are you, boss? In this case, let's see if this midband gets respected. So your Fibonacci box is inside the midband. Your midband is there. So midband is at 45 almost. I see a test trade. Oh, it passed. Let's see. So our divergence failed, but midband passed. 3 points. Yes, trader Vig is having problem. सही स्ट्रगल हो रही है। कुछ भी नहीं, पूरी रात में ही कुछ भी। प्लस मार्केट की एक डायरेक्शन थक जाती है ना, चढ़ 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 के, तो लोग फिर स्केर्ड हो जाते हैं, बाय करें तो यहाँ से गिर ना जाए। हाँ, नो मैं वंडरिंग, या Oh, okay. We get paid. Still sitting at midnight. Still,
नहीं जाएगी तो सर हम भी साथ चले जाएंगे। तो अलर्ट आए R2 भी इन दोनों का कुछ नहीं पता। ये जो एक स्क्रीन पे पावल है, एक पे ट्रम्प है। मेरा ख्याल है खत्म हो गया, लेकिन इट्स डन। हाँ वो तो बोल रहा है, वो देखिए। So I think the standard is asking you questions. This is grilling them down, right? Then so this mid-band worked as well. 2 points. सर जैसे Nasdaq में इसने लोड लो बनाया, ठीक है, लेकिन पॉइंट की स्विंग कितनी बड़ी थी? it came down Malta, 22 points. Not enough. Has to get severely oversold. Meaning at least 35 point की swing तो आए ना? It certainly happened to me once. I sold a condo to somebody and what do you say? ये हम उसको कहते हैं oversold या overbought, और वो 35 पॉइंट 40 के बाद Nasdaq में बिल्कुल लाइन आपकी नीचे हो जाती है। It's common in that area. God caught him out. Yeah. Common, we set up in. Kingsbridge Gardens also. Yeah, Kingswood, yeah, Kingswood. No, not Kingsbridge. Kingswood, something. No, Kingsbridge is in this Knightsbridge. Knightsbridge. For I've looked at all those areas. exchange? No. Currency exchange? No. Oh, because there's a Real company. estate and shooting. Okay, because there's Kingsbridge is There's a shooting in a building that's condos in. And I was reading an article yesterday. Pre-construction is halted. Yeah. It is. Especially the condos. It's all. It's done. If anything, people are stuck right now. There are not these assignments deals with people are selling them less than what they paid for. Yes. Homes is getting in a very slow pace, but condos they are like. Yeah. ये इधर से इमिग्रेंट बंद किया, उधर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, यही काम होना है और क्या? I think they brought it in part with the homes. No, see, the thing is, anything that was selling for, practically speaking, let's say the value was similar with that. I'm gonna call it a day. This is not worth it. For 1.2, I'm gonna get. Roger back. Yes, ma'am. down to its actual value. 1.2. Yeah. And set up my super area. Okay, super areas he does, but flow bot and stuff I do, no problem. So give me your AnyDesk. I will set up your flow bot. Rental is going to go more down, and even the home prices are falling. Yeah, the rent's already coming down. Rents are good on that. Well, see, the thing is, landlord thing, if they buy a house, the renter will pay the entire mortgage. Well, nobody put a gun on your head saying, "Oh, buy the property at overpriced price." You know, like everything was overpriced at that point of time. These days, I think people are renting. They're much happier than the people. Exactly. Who own a house? Like, if you have a good cash flow and you're just renting a place, you're better off. You pack up your bags and go anywhere you want to. Instead, you're owning a property and you're stuck.